because it's a kind of reminder that the AIDS has not gone. This pandemic is still there in our world, and worldwide nations are aiming that by 2030 we should eradicate AIDS. एक बार 1 दिसंबर चला जाता है तो उसके बाद हम इस बीमारी के बारे में सोचते भी नहीं और ना ही विचार करते हैं। तो जब तक हम इस बीमारी के बारे में बात नहीं करेंगे, आई डोंट थिंक वी कैन इरेडिकेट इट। जब भी एड्स की बात होती है हमें लगता है कि भाई ये बात करने की चीज नहीं है। देयर इज अ सोशल स्टिग्मा दैट इज अटैच्ड टू इट, but we should understand that we should talk about it so that we can take initiative to eradicate it. Now, AIDS, as you all know, it is acquired immunodeficiency syndrome, and this disease is acquired while we are living. Now, how is it caused? It is caused by a virus named HIV. This virus was first found in monkeys. And it is believed that because Africans, they ate that monkey, so the virus went into their body, and after that it got transmitted through body fluids. There are various methods of its transmission. One is of course unprotected coitus, but we should know what are the other means also. If a person is suffering from a deadly disease like thalassemia or hemophilia, they require continuous blood transfusion. हमेशा उनको अपना ब्लड जो है बदलवाना पड़ता है। तो we need to be aware कि जो ब्लड हमारे बॉडी में डाला जा रहा है, it should be free from HIV infection. It should not be infected. ये awareness हमें होनी चाहिए। Because हम पूरा भरोसा डॉक्टर्स एंड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स पर कर देते हैं कि चलो दे आर गिविंग अस इट्स ओके, बट देन अगर वो HIV इन्फेक्टेड हुआ तो अल्टीमेटली वी वुड बी द सफरर्स। सेकेंड, another third means of transmission is through infected needles. कभी ना कभी हम सबको ब्लड टेस्ट करवाना पड़ता है या we take injections and all. So that time we have to take care that only disposable needles and syringes are used. आजकल तो वैसे ये होता है कि हम disposable ही यूज करते हैं, but we have to be cautious about that also. Then AIDS is also spread from mother to the child. If a female conceives, then the first test that is done is HIV test. अगर एक मदर को डिजीज है तो वो ध्यान रखा जाता है कि भाई वो डिजीज जो बेबी है उसमें ना। सो दीज आर मेथड्स एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन वी नीड टू बी अवेयर ऑफ दैट। इस बार का जो थीम है एड्स का है वो है लेट कम्युनिटीज लीड। पहले हमारे गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये सारा दे यूज्ड टू प्ले अ पाइवटल रोल, बट नाउ the theme is communities. We as individual, we are a part of community. So we need to spread this awareness. We need to educate the people. We need to tell them, and we also need to support the people who are suffering from AIDS. Last year, 20